Before we start our program, we would like to pay a tribute to our teacher, Godkar sir, whom we lost very recently. Every person who is from a medical lab technology profession is very aware, and we have read his books, तो उनकी किताबें पढ़ के ही हम लोग सब यहाँ तक आए हैं. He was a very active member, always supported us, और सारे बच्चों के काफ़ी करीब रहे. And recently we lost him. So I would request all of you to please raise and let us pray for him in silence for 2 minutes. Mrs. Archana Chaudhary to give a welcome speech. Mrs. Archana Chaudhary. Dignitaries on the dais, esteemed faculty, our respected speakers, Ms. Ashwini Taide, ma'am, Ritu Chadda, ma'am, Mr. Vinayak Lad, sir, Mr. Prashant Ghulekar, sir, Mr. Ramit Chaugule, sir, and all delegates, my dear colleagues, good morning and very warm welcome to all of you on Qualcomm 2026. Our industry partners, AGD, Transitia, CPC Diagnostic, Cupid, LabBridge, Medivise and others, good morning and very warm welcome to all of you at Qualcomm 2026. On the behalf of ARPP, I thank you for taking time out from your busy lab schedules to be here today. Your presence tells me that we as the paramedics are ready to learn, upgrade and take ownership of our passion, of our profession. Qualcomm stands for quality in 2026. Quality is no longer optional for diagnostic labs. With enable expectation rising, NCHP registration coming in and patients become more aware. Our role as a lab professional is under spotlight. One wrong report can change patient's life. One QC miss can close a lab. Qualcomm is our platform to ask how do we raise the bar together. Today's agenda covers exactly what we need. For patient safety, AI in diagnostic to understand our new instruments to big change future and scope of NCHP. We have kept it in practical. My request to all of you, be an active listener but also an active questioner. Network during tea and lunch, best solution often comes from the colleague next to you. Thanks our sponsors and faculty. They are here because they believe in building paramedical professional, not just selling product. I am also special thanks to my ARPP secretary, Mrs. Kanchan Nene, treasurer Mrs. Anuja Shinde, Dr. Kishore Desai is our advisor, Vinay sir, Dilip Dhule sir, Rahul Shrivas sir, Hari sir, and our member and entire organizing committee of ARPP for making this CME possible. Also thanks Mr. Shiv Kumar Sanab sir and Anil Govindani sir and CLOA members. Special thanks to our chief guest for gracing us today. Friends, degree gives us job. CMEs like Qualcomm help us to keep that job and grow in it. Let's make today count of ourselves, for our labs and for our patients who trust the report we sign. Once again, welcome to Qualcomm 2026. Let's learn, share and grow together. Thank you. I declare the conference is open. May I request Ms. Kanchan Nene to give a brief about today's CME. Very warm good morning to all of you. Respected President Mrs. Archana Chaudhary ma'am, our advisor Dr. Kishore Desai sir, my entire team of ARPP, esteemed speakers, delegates, sponsors, dear friends, once again a very good morning. On behalf of Association of Registered Paramedical Professionals Kalyan, myself, Kanchan Nene, Secretary, I extend a warm welcome to all of you to Qualcomm 2026. Today is a very special occasion. While our association conducts educational programs for many years, like from 1990s, like even when I was not born, but the name Qualcomm was introduced in 2015. As we gather here today, we proudly celebrate 10 years of the Qualcomm journey. Over the last decade, Qualcomm has served as a platform for learning,
professional development, knowledge sharing, and promoting quality healthcare. Healthcare is changing rapidly, and in today's sessions on artificial intelligence, modern diagnostics, laboratory management, and the future of healthcare professionals reflect our commitment to staying prepared for tomorrow's challenges. I sincerely thank our speakers, sponsors, delegates, and organizing team for making this possible. And before I conclude, I would like to wish everyone a very happy International Yoga Day, a very happy Father's Day, and my best wishes are also with all the students who are preparing for UG NEET examination. And as an all-women executive committee leads ARPP this year, it is especially inspiring that today we also celebrate women excellence in sport. On behalf of ARPP, I extend our best wishes to Team India Women T20 World Cup for their women's T20 match against South Africa. Once again, welcome to Qualcomm 2026. I wish all a day filled with learning, networking, and inspiration. Thank you. So, Qualcomm 2026 is always known to have all its lectures in time. We start in time, we end in time. So, even today we are absolutely in time, and I should thank and congratulate all the delegates who has come at this early time. Thank you very much. So, let's start with our first lecture. The first lecture is the Intelligent Laboratory, AI Shaping the Modern Diagnostics. As everybody is aware, आजकल की तारीख में सब AI हो गया, ChatGPT को दे दिया. All instrumentations are getting into AI. So we will have our first lecture, and it is by Ms. Ashwini Taide. She is a data scientist from AGD Biomedicals. May I request her to please be on the stage. I request Kanchan Madam to introduce our first speaker. Computer vision and artificial intelligence for digital pathology. As a key member of the R&D division at AGD Biomedicals, Ashwini develops AI-assisted solutions that help pathologists transform complex microscopy images into clinically meaningful diagnostic insights. Her work bridges cutting-edge technology and real-world healthcare applications, contributing to faster, more accurate, and more efficient processes. In machine learning, under the mentorship of Harvard faculty member, she brings us a unique combination of scientific rigor, analytical thinking, to the evolving field of computational pathology. Please join me in warmly welcoming Ashwini ma'am on the stage. Before that, I request Dr. Kishore Desai sir to welcome ma'am with a floral bouquet. All right. So humans have always invented tools to make their life easier. म्हणजे आपण नेहमी फास्ट कसं होईल काम ह्याचा आपण विचार केला आहे. लवकर होईल, एफिशियंटली होईल, ॲक्युरेटली होईल. So we used to do mathematical calculations by hand before. Then we invented calculators. Then we used to write records, by hands. मग त्याच्यानंतर we had computers to have electronic records and do some calculations and handle stuff. Now you have a computer in your pocket. That's your smartphone, actually. AI actually is just the next step in this evolution right now. So where it should be useful, so it will give us an insight from your talk, and how it has to be, because it's small labs, bigger labs, middle labs, so they have a different type of way of working. So how we can connect all the data from collection of patient to the delivery of the reports. So this is another challenge. So that is what I was just thinking. And the simple thing in a lab, I have just seen, for example, we had a query of how the crystals are looking. So we just took a picture from the microscope, give it to the AI. Then it has given me the chances, these are the possible results. So this is how we are looking at. But now it has given a lot of idea how the different things like LIS, LMS, we are talking in the different industry. Thank you. Thank you so much.
And also when it comes to medical field, there are special medical AI models which are trained on medical data. When we use those models, the results are much more accurate, and the data and the accuracy is publicly available. The data might not be completely publicly available, but its accuracy and where it makes mistakes is also publicly available. So if you go into the governance, you can actually look into that, which model was used, which clearance does it have, is it following the DPDP Act or not. So all these little things are there when it comes to compliance. Request Archana madam and Kanchan madam to please be on the stage. Ma'am, you can give a floral bouquet to Isha also. And I request you to present them a memento. Dr. Chadha completed her medical education from MGM Aurangabad and brings over 12 years of experience in the field of laboratory medicine and diagnostics. She is currently leading the Borivali Laboratory of Torrent Diagnostics, where she plays a key role in advancing quality-driven diagnostic services and laboratory excellence. With her extensive experience in clinical diagnostics and microbiology, Dr. Chadha has been actively involved in adopting innovative technologies that enhance the accuracy, efficiency, and speed of laboratory testing. Today, she will be speaking on Beyond Conventional Identification, the MALDI-TOF advantage in modern microbiology. In this session, she will explore how MALDI-TOF is transforming identification of microorganisms and enabling us for the faster turnaround time. Please join me with a round of applause to welcome Dr. Chadha ma'am. I request Shri Dilip Ghule sir and Dr. Kishore Desai sir to welcome ma'am with a floral bouquet. So if you see, what is the USP of MALDI-TOF is, first you identify the gram-positive, gram-negative yeast or fungi, and then with the unique proteomic fingerprint, you can decide what organism it is. Means, you know on microscopy, this is what you're looking at. You process in MALDI-TOF, and that is how the fingerprint is given, proteomic fingerprint, and then you identify what your organism is. Next. So why we prefer MALDI-TOF nowadays is because it is easy to use, cost effective. Why? Because one machine, all the answers are there in that one machine itself. So definitely it is cost effective, and definitely when you develop the skill to use it, it becomes easy to use because it's just a learning skill that you need to have. Once you have that skill, it is very easy to use. So what happens is, since it is automated and everything is through your computer, so it is a paperless institute basically. You need not have any papers with you, any workflow with you. Everything is there in the system at one glance. So even if you want something, you must have released 1 year ago also, everything is there in the system. You can have it on the go anytime. And of course, high throughput. Naturally, when we are saying, we will be having so much of samples, NRLs have the load NRL, any NRL must be having is in, thousands. So definitely with the higher throughput, this definitely helps. Of course, IDs are also very fast in blood cultures because, in admitted patients, blood culture is the first thing that they do where they want to identify any PUO, any pyrexia of unknown origin. First that they want to do is blood culture. So blood culture reports are also very easy in this. Then the inbuilt storage of, this proteomics, they have a stored library. So what it does is, basically when it takes you a proteome, it compares to the library that it has. So it has a very advanced library of having more than 5,300 organisms. And what you can do is, suppose what happens, sometimes it happens is, someone has requested that, this is very earlier, kindly help me to process it. So you can choose which sample if any urgent sample is there, you can process it at a better time frame. So whenever there is a report of growth of some XYZ bacteria, it is reported as kindly confirm its role as a commensal
before starting antibiotic treatment, or kindly confirm its role as a pathogen before starting antibiotic treatment. So is it a kind of thing that the automated technology is there, जो भी आता है report हो जाता है? Because see, the problem with automation anywhere, not only this, even for CBC for that matter, any automation that you do, see, you have to understand, the human brain is much better than any AI or any system, right? Please present a memento to ma'am. I think it was a very informative lecture. Good afternoon, everybody. It is my pleasure to introduce our next speaker, Mr. Vinayak Lad, who brings over 18 years of experience in the field of laboratory diagnostics and healthcare technology. Mr. Lad is currently working as a Deputy Regional Service Manager for the Mumbai and Raigad region. He leads a team of engineers and application specialists providing after-sales service and technical support for Transcaia IVD instrument. He holds a bachelor degree of biomedical engineering and has extensive expertise in the critical care, hematology and biochemistry system. Throughout his career, he has helped laboratories maintain reliable operations and achieve optimal instrument performance. Today, he will be speaking on laboratory equipment life cycle management from purchase to performance. In this session, he will share practical insight on how proper equipment management from selection and installation to maintenance and performance monitoring can help laboratories improve efficiency and deliver quality results. Please join me and give a warm welcome Mr. Vinayak Lad. Sir, please, we'll have a floral welcome. I would like to know, I've seen a lot of reports when I do the audits for NABL and all. They don't have installation report, operational this one, and performance. Many times it is just signed by the people and some things are ticked. There is no data. And when we send across to NABL, they ask us for data. Where's the data? You give us, provide us the data. And it becomes really difficult. We have to go after your people, application people to give us the data. They would say it is in the computer, I will come and give you. But why are they not providing immediately when they make an installation, operational and professional report, performance report? They should be doing it. This is happening with all the companies, I would say, most of the companies. And this is very wrong. The other question is, you have to answer on this, why it is happening. Yes. The other thing is preventive maintenance. Somebody asks questions on preventive maintenance. Preventive maintenance has to be done at least once in a year. Okay? Why should the company miss it? First of all, you are saying NABL lab should, a preventive maintenance has to be done. In fact, there are some companies, I would not like to name them, they would call and take an appointment for आपका preventive maintenance due है. That is very good, but not all again. Preventive maintenance के बाद में calibration करना बहुत ज़रूरी है, which is never done. I'll tell you, they never provide you the calibration report. You have to be very careful. जब भी preventive maintenance हुआ है, यहाँ तो आपका कोई भी maintenance हुआ है, major maintenance, you have to do a calibration. Otherwise, your machine is not working. आपका जो भी machine labs में है, every year at least once they have to be calibrated. Otherwise, you are at fault when you are giving reports. You can be held legally. आपको calibration report मांगा जाएगा कोर्ट में और आपके पास नहीं रहेगा. तो you have to calibrate your machines at least once in a year. Whatever charges are there, they charge you for that calibrator and all those things. लगाते हैं charge. And वो भी कोच ज़्यादा लगाते हैं. कोई 15,000 बोलता है, कोई 20,000 बोलता है, कोई 10,000 बोलता है. हर एक कंपनी का अलग अलग है. तो when you purchase a machine, be very careful कि आपका calibrator कितने का आएगा. Especially CBC machines I'm talking about. ठीक है? Sir, आपका answer on this. Sir, if you are told no regarding the documentation work during installation and preventive maintenance, NABL lab have their standards. So we do give after installation we do give we perform checks like precision checks, validation is done, okay, and after that we give the IQ type. We are not telling that we are not giving, but if your requirement is there, you can let us know. We will do it, definitely do that, because we do validations at various sites. We do the accuracy and reliability test. Hi, this is Vinesh Nair. I've been the charter president of our ARPP, and we are doing this particular Qualcomm 2026. We have been doing it for the last 4 years,
and we have almost 100 members joining us for this particular CallCon, and we have been involving many companies and good speakers for the upgradation of these technicians and all, wherein we interact a lot and we network a lot. We try to understand and solve problems of the laboratory problems that we have. And the people in and around Kalyan, Domboli, Ambernath, Badlapur and Bhiwandi join us. Thank you. So you have approximately, as you said, you have 100 members. Or if at all any plan is there, Yes, what kind yes, of yes. activities do you do to attract more members? We have something called as a pep talk, which we do it almost after 2 or 3 months. Every quarter we usually do it, and we involve people into this. So this gives an upgradation to this particular laboratories, and with the upcoming technologies and everything is shared. So what happens basically, these people tend to get engaged in a better way and are advanced in technology. So this helps us increase our membership also. And yes, we do have membership campaigning going around. We have our QR codes where people can scan the QR code and register themselves. Yes, the only criteria that we have kept it for ARPP is they have to be registered with the Paramedical Council of Maharashtra. Along with their registration number? Yes. Okay. Registration number is mandatory. People who have registered but yet to get the registration certificate can also be our members, but they will be put up as a provisional member. Okay, very good. Sir, as you said, you help laboratory owners also when they face any. You have been helping them and help them also. Yeah. What kind of problem do they face? See, usually the kind of complications what they come across is with the kind of machines they are using it, the technology they are using, the volume that these people are having, and accordingly what machines are better for them. Yes. So we discuss all those things with them. So that helps them to understand which machine is better for them. Very good. That's it. So yes, of course, other than that, whenever they have any technical issues which is not resolved in online data, we tend to share it and solve it across. Great. Yes, this also helps understanding the conflicts in the market also. Yes. So we build up good relationship so that automatically reduces the inter-laboratory competitions. Correct. That's why. So that becomes a healthy environment altogether. Very good. Yeah. Amicable environment. Yes, amicable environment for all. Okay. Yeah. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. मेरा नाम है शोभना मनोहर चौधरी और मेरी लैब है भिवंडी में लेखा क्लिनिकल लेबोरेटरी नाम से, और लास्ट 30 ईयर्स से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। और हमेशा मैं ये ऐसे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करती रहती हूँ और उससे बहुत सारे नॉलेज मिलता है, बेनिफिट्स होते हैं, न्यू टेक्निक्स या एडवांटेजेस वो सब मिलता है उससे, और सब मिलते हैं, वो एक एडवांटेज होता है, सब सीनियर्स मिलते हैं। जुड़े हुए इस एसोसिएशन के साथ? कम से कम 8 साल से। रेगुलर आते हैं हर साल? बीच में थोड़ा इरेगुलर था, पर हाँ मिस भी हो जाता है, पर जब भी टाइम मिलते है पता चलता है आते रहती हूँ और एंजॉय करती हूँ मैं हमेशा। आपने तो इस एसोसिएशन से जुड़ के आपको बहुत फ़ायदा हुआ है, लाभ ही हुआ है अभी तक? बिल्कुल। आपकी वजह से नई जनरेशन को कुछ लाभ हो सकता है थ्रू दिस एसोसिएशन? हाँ, जैसे हम लोग बता सकते हैं सबको कि ऐसे ऐसे होते हैं, जैसे अभी ये न्यू मेंबर है, इसको भी बताया था कि मतलब अटेंड करना चाहिए और उससे बहुत कुछ नॉलेज मिलता है, एडवांटेजेस मिलते हैं, न्यू टेक्निक्स रहते हैं, न्यू मशीन्स रहते हैं, तो उसके बारे में अपने को नई टेक्नोलॉजी अपडेट करना चाहिए सब। नेटवर्किंग हो जाते हैं और नए लोगों को जोड़ते, नए लोगों को जोड़ने के बाद आपको ऐसा लगता है कोई आत्मसंतुष्टि मिलती है? वही बिल्कुल बहुत खुशी होती है सबसे मिलके। और ऐसे ही हम लोग आगे जितने भी होते रहेंगे, अटेंड करते रहेंगे, बिल्कुल बहुत खुशी रहेंगी, आगे भी मिलते रहेंगे। दिलीप घुले, आकाश क्लिनिकल लॅबोरेटरी कल्याण, माझं 28 वर्षापासून लॅब आहे आणि मी जवळपास 30 वर्षापासून प्रॅक्टिस करतो। असोसिएशन बरोबर तुमचं? असोसिएशन मी कमिटीमध्ये होतो, मागच्या कमिटीमध्ये मी सेक्रेटरी होतो, आता कमिटीमध्ये आहे। हो थँक्यू। आणि आता तुम्ही नवीन लोकांना अट्रॅक्ट करण्यासाठी काय करतात? हो, आता आपल्या असोसिएशनच्या थ्रू आपण वेगवेगळे CME घेणार आहे, काही पेपटॉक घेणार आहे आणि मग त्या हिशोबाने आपण मेंबर पण घेऊ, आपली असोसिएशन वाढवायसाठी मदत करू आपण। पण आपल्याकडे जे पॅरामेडिकल काउन्सिल रजिस्टर्ड लोक आहेत त्याच लोकांना आपण घेतोय ॲज ए मेंबर। व्हेरी गुड सर। आणि आजचे जे प्रोग्राम आहे सर, कॉलकॉन 2026, तुमची काय अपेक्षा आहे? नाही, अपेक्षा म्हणजे जास्तीत जास्त लॅब ओनर्सने आमच्यासोबत
यायला पाहिजे. सगळ्या लोकांनी जास्तीत जास्त ज्या काही आमच्या CME होतात त्या रेग्युलर अटेंड करायला पाहिजे आणि त्यांना त्याच्यातनं नॉलेज पण मिळेल आणि एक गेट टुगेदर आपल्या सगळ्यांचं भेटणं पण होतं. थैंक यू वेरी मच सर. कि वो लेडीज़ ने ऑर्गेनाइज़ किया है. बिल्कुल. हाँ, मैं उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी ऑल लेडीज़ जिन्होंने सेमिनार कंडक्ट किया है. बहुत अच्छा है. बेस्ट ऑफ लक. ऑल द लेडीज. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. मेरा नाम कमर जहाँ शेख है और मैं भिवंडी को बिलोंग करती हूँ और मेरे लैब का नाम है गेटवेल क्लिनिकल लैबोरेटरी एंड आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस फ्रॉम 16 ईयर्स. 16 ईयर प्रैक्टिस और ये मेरा पहला साल है यहाँ पर आने का. फर्स्ट ईयर लेकिन देर आए दुरुस्त आए. बहुत अच्छा लगा यहाँ का एक्सपीरियंस. टाइम मैनेजमेंट यहाँ का मतलब परफेक्ट टाइमिंग पे सब स्टार्ट है. हर चीज़ एकदम प्रॉपर और वेल ऑर्गेनाइज्ड है. बहुत अच्छा लगा और आगे भी हम लोग हर साल आएंगे ज़रूर. तो 16 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और पहली बार आए, आपको लगा कि 15 साल में बहुत कुछ मिस कर गए? बिल्कुल जो मिस कर गए लेकिन अभी कोशिश करेंगे कि उसको कवर करें आगे जाके हम लोग. इस प्रकार की CMEs को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल. हाँ, इसमें कैसा है ये CME में अटेंड करने की वजह से जो है हम लोग अपडेट रहेंगे. क्या टेक्निकल न्यू मशीनरी क्या आ रही है, नई बीमारियाँ क्या आ रही है, उसको कैसे टैकल करेंगे, है ना. इस सेमिनार में आने का मकसद ही यही है कि हम लोग को नई चीज़ें पता चले, है ना, कि क्या क्या बीमारियाँ आ चुकी है. नेटवर्किंग, सोशलाइजिंग कैसे करना है, सबसे कम्युनिकेट करना है. सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा, थोड़ा स्किल्स भी बढ़ाना पड़ेगा, है ना. ओके, थैंक यू. I am Anil Govindani here from, I am the Director for Quality Management at Qualipath Laboratories. It is Qualipath is a private limited company, referral lab at MAPE. We are doing all the tests and today I have come to attend this one-day conference of Kalyan Dombivli Paramedical Research Association. And I come every year. In fact, this is one of the good organized conference. They have good speakers. Today I have already heard two speakers, one on the AI and other one on microbiology specialization. Both sessions have been fantastic. We are looking forward to the rest of the sessions also in the next few hours. And all the arrangements here are always fine. There are other conferences also happening for paramedicals, medical technologists. The next one which is going to happen at CME, which we held at Navi Mumbai, at Royal Orchid at Navi Mumbai. That will be probably on second week of July, Sunday. So I would request all of you to get in touch with us. You can also join for that. Are you any of the committee members or organizing? Yeah. I am the founder, president. This is CLOA. This is called CLOA Clinical Laboratory Owners Welfare Association. Oh, great. You can get in touch with me or get in touch with Sanab sir. Sanab is the president. My number is 9322244275. You will enjoy the conference. It is with cocktail and dinner on a Sunday evening. And you will have good speakers there. So all of you can join us there. Okay? If you are our members, it is free for you. If you are not our members, then we will see how to accommodate you. Okay. Maybe with a small charges. No problem. Thank you. Sir, you attended 2 lectures. You found them very interesting. What are the other lectures you would like to be included in such kind of seminars or CMEs? Okay, there are so many topics which we can take up. Like quality management. It is very important. Correct. We can have something on NABL. They have NABL entry level these days. Each and every laboratory should at least be NABL entry level. Yes, sir. Which I am propagating and I am seeing, because in NABL entry level you have calibration. Your machines have to be calibrated. Correct. That is very important. And most of our labs don't calibrate the machines for years. Very true. So how can we give proper reports? So it is very important that we have
calibrated machines. They also insist that we have ICAS. ICAS is the external quality control. So only on these two criteria they would be giving you an entry level certificate, NABL, and which is not very costly. It is 15,000 rupees for 3 years. They charge you only 50,000 rupees for 3 years. So I would advocate everyone to go for that. And what happens here is that you are getting a recognition. Very true. Your laboratory is recognized. You can always put on your board that it is an NABL certified laboratory. It does the value addition of the laboratory. For any help you want, you can again contact me. Sure. I am consulting on that, helping you how to go about all this. Okay? So please feel free to call me. पहले बताइए सर, आपका नाम क्या और आप कहाँ से आए हैं? मैं मिस्टर श्री चौधरी हूँ। मैं ऐरोली नवी मुंबई से आया हूँ सर। नवी मुंबई से कल्याण की यात्रा। यस सर। और आप कॉलकॉन से कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं? कॉलकॉन से मैं जुड़ा हूँ सर वैसे 3 साल से, लेकिन फर्स्ट टाइम CME अटेंड कर रहा हूँ। पहली बार CME अटेंड कर रहे हैं। इसके पहले न अटेंड करने का कारण? कम्युनिकेशन गैप था सर, और कुछ नहीं सर। और आज आने का कारण? आने का कुछ नहीं, अभी वो लोग हमारे यहाँ पार्टिसिपेट होते हैं नवी मुंबई में, हम लोग अभी यहाँ पार्टिसिपेट हो रहे हैं, तो गिव एंड टेक प्रोसीजर है और कुछ दूसरे के साथ नेटवर्किंग होता है। यस सर, नेटवर्किंग होता है, गिव एंड टेक होता है, जो भी नया टेक्नोलॉजी होता है बिल्कुल वो मिलता है सर, और कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। आपका नाम और कहाँ से आए? मेरा नाम पीयूष शर्मा है। हाँ, मैं नेरुल नवी मुंबई से आया हूँ। नेरुल नवी मुंबई से आप यहाँ पहली बार आए? हाँ जी, हाँ जी, पहली बार आया। आपका आने का उद्देश्य क्या है? आज CME में हमें हमेशा नए नए जानकारी मिलती है, नॉलेज होता है, अपडेट्स क्या है, ये सब सीखने को मिलता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे आज ज्वाइन किया। तो आप सिर्फ कॉलकॉन से जुड़े हुए हैं या नवी मुंबई का कोई एसोसिएशन है उससे भी जुड़े हुए हैं? कोलवा में मेंबर हूँ मैं। ओके। पहले मैं एक सेक्रेटरी था वहाँ पे। हाँ। क्लिनिकल लेबोरेटरी ऑनर वेलफेयर एसोसिएशन में, यहाँ पे मैं जुड़ा हूँ, इस पर आया हूँ पहली बार। हाँ, इसके पहले तो नहीं था, अभी फर्स्ट टाइम और आया। लोगों को आप जोड़ना चाहेंगे कॉलकॉन से? यस या नवी मुंबई की कोई एसोसिएशन के साथ? हाँ हाँ, अगर क्योंकि CME क्या होता है सर, नॉलेज के लिए होता है, हमें अपडेट क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है मार्केट में, कौन सा अपडेट है, वो सब जानकारी मिलती है, तो इसके लिए जाना बहुत अच्छा लगता है। क्या होना चाहिए यहाँ से मन में? यही कि जब भी कहीं नॉलेज की बातें हो, जब भी कुछ सिखाया जाए, जब भी कुछ नया अपडेट्स हो, तो उसमें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। आज संडे दिन था, हम भी घर पे एंजॉय कर सकते थे, फैमिली छोड़ के आए, चलो सीखते हैं, कुछ करते हैं, यहाँ कुछ अपडेट देखते हैं, तो लोगों को यही कहूँगा कि आप भी इस तरह के जब भी कुछ इवेंट्स होता है ज़रूर ज्वाइन करिए और नॉलेज लीजिए। थैंक यू। टुडे you already registered and today again you are registering yourself, right? Yes, always registered. Please. My name is Arvind Bhoir and my located lab is Bhiwandi, Kamadghar area, National Clinical Laboratory. National Clinical Laboratory is your lab. And since how long you are running the laboratory? About 20-26 years. 20 to 26 years. And since how long you are associated with this association? Long time. Long time. What are the benefits you have got from this association? So earning very knowledgeable तुम्हारे lectures वगैरह, and long information वगैरह. Okay. That's all. Proof? Okay. Thank you. How long you are associated with Qualcomm? I'm Vinod Gupta from Bhiwandi. Yeah. I'm practicing from last 28 years. Very good. Qualcomm जब से स्टार्ट है ये एसोसिएशन तब से मेरे साथ तब से एसोसिएट जुड़े हुए, हूँ, 14 तब से साल जुड़े हो गए, मुझे अभी पता चला। लगभग 14-15 साल हो गए। बहुत बढ़िया। किशोर सर, कंचन और कल्याण के सारे मेंबर्स जी हाँ, काफ़ी क्लोज है, काफ़ी अच्छे हैं, और इनके साथ जो इनका साल का एक ही प्रोग्राम होता है, बट बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज वाला और बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। बिल्कुल। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगता है ये प्रोग्राम। आपकी ओर से Qualcomm को क्या फ़ायदा होता है आपकी ओर से एज एन इंडिविजुअल? Qualcomm के जितने स्पॉन्सर है, Qualcomm जो भी हमको करता है, हमको सब स्पॉन्सर करते हैं, अरेंज करते हैं, उनका सारे रिक्वेस्ट पूरा करते हैं। एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं तो डेफिनेटली एसोसिएशन के साथ में चलना ही पड़ेगा। यंग एंटरप्रेन्योर जिन्होंने नई लैब खोली है साल 2 साल 3 साल पहले और Qualcomm से अटैच नहीं है, जुड़े नहीं है अभी तक, उनको जोड़ने के लिए आप कोई प्रयत्न करते हैं? डेफिनेटली जितने लोग हैं हमको बोलते हैं आइए इधर, बहुत नॉलेज का ढेर मिलता है यहाँ पे, इतने सारी कंपनीज आती है, इतने सारे स्पीकर्स आते हैं, और ये जो हमको नॉलेज दे देती है किताबों में कभी नहीं मिलेगी, तो एक्सपीरियंस से ही मिलेगी। और स्पीकर्स भी काफ़ी अच्छा एफर्ट लेते हैं, और ये Qualcomm जो स्पीकर अरेंज करता है एकदम यूनिक अरेंज करता है, और एकदम अच्छे ढंग से जो पर्टिकुलर टॉपिक से उसको एक्सप्लेन करते हैं, करंट सिनेरियो हो, टेक्नोलॉजी हो, हर चीज़ कवर करते हैं। इट्स अ फेवरेट, मैं तो Qualcomm का वेट करता हूँ। अरे वाह, क्या बात है सर। और लोगों को जोड़ना चाहेंगे सर? डेफिनेटली, काफ़ी लोग, हमारा भिवंडी का ग्रुप आया है 10-15 लोगों का एक साथ में। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।
मैडम पहले अपना नाम बताइए। अनुजा शिंदे। यहाँ आने का आपका उद्देश्य क्या है, पर्पस? पर्पस मीन्स कई एसोसिएशन है, सब साथ में आते हैं, अच्छा लगता है और थोड़ा लैब का भी मीन्स नॉलेज, हाँ एक में, हाँ फायदा क्या होता है यहाँ आने का? तो सब लोग को मालूम पड़ता है कि क्या चल रहा है लैब के लिए। बढ़िया। आप कितने सालों से आ रहे हैं मैडम यहाँ पर? जब से स्टार्ट हुआ तब से सर। कितने साल हो गए? 14। हाँ 2014 से स्टार्ट हुआ और 2026 यानी 12-13 साल। हाँ, एक दो बीच में सर गैप हुआ है। गैप हुआ है। हाँ। ना आने का नुकसान हुआ था कभी कोई? हाँ होगा ना सर नुकसान तो। क्या नुकसान हुआ? नहीं पता चलता है कि क्या हो रहा है। हाँ। और आने पे सब मालूम पड़ता है सर अपने आप में एकदम। हाँ, और सबको नहीं नॉलेज, अपना नॉलेज बढ़ जाता है कि लैब का क्या क्या चालू है, इंस्ट्रूमेंटेशन का मालूम पड़ता है। वो सब हम लोग कैसे एक में शेयर करते हैं। करने के पहले एक दूसरे से आप लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद कंपनी चूज करते हैं, मॉडल चूज करते हैं, ये फायदा होता है। किट्स के बारे में भी ऐसे ही करते हैं। आपका नाम बताइए पहले। श्वेता तिवारी। हाँ? श्वेता तिवारी। श्वेता तिवारी। आपकी लैब कहाँ पर है? कल्याण ईस्ट। कल्याण ईस्ट में। तो यहाँ आने के आपको क्या फ़ायदे हुए और कितने सालों से आ रहे हैं? मेरा अभी फर्स्ट ईयर ही है। पहली बार? तो अभी नॉलेज लेना है मुझे। ओके, आज नॉलेज गेन करने आए हैं। वेरी गुड। मैडम आपका नाम? आशा सिंह। आशा सिंह। हाँ। आप 14 सालों से आ रहे हैं? आप भी 14 सालों से? लेकिन मुझे सर 35 ईयर हो गया है लैब। या लैब चलाते हुए 35 वर्ष हो गए, 14 सालों से आ रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। पहले तो इतना नहीं था क्रेज, अभी ज़्यादा हो गया है। नेटवर्किंग अभी तेज हो गया, पहले इतना ज़्यादा जमावड़ा ऐसा नहीं होता था। ये कहना चाहते हैं? हमारी मैडम का बहुत योगदान है। नहीं अच्छा भी लगता है इसमें और अपना सब समझ में भी आता है। नए फ्रेंड्स होते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मिसेस नीलिमा नाइक है, डोंबिवली में। अरे वाह। आपको यहाँ आने का नया फायदा क्या हुआ? पिछले जो नया चल रहा है लैब में वो सब मालूम पड़ता है। ओके। और क्या करना चाहिए लैब के लिए, लैब अच्छा चलाने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल। लेबोरेटरी जिन्होंने खोल के रखा है उनको इसमें ज्वाइन करवाने के लिए आप उनको प्रेरित करते हैं? हाँ करती हूँ ना। कैसे करते हैं? उनको अभी उनका नंबर लेके इधर से वो हमारे को कांटेक्ट करने बोलते हैं, सब भाग लेने को बोलते हैं इधर। लोग जुड़ जाते हैं आसानी से? हाँ। उनको फायदा होता है? हाँ होता है, हमको भी नए फ्रेंड्स मिलते हैं। अरे क्या बात है, फिर नेटवर्किंग बढ़ता है। नेटवर्किंग बढ़ता है। ओके जी, थैंक यू। मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपका नाम? गौरी पाटिल। गौरी पाटिल। गौरी पाटिल। हाँ जी, यहाँ आने का गौरी पाटिल, राइट? सॉरी, यहाँ पे आने के फायदे क्या हुए आपको? अभी मैं तो पहली बार आई हूँ। पहली बार आए हैं? ओके। और कुछ नया वाड़े घर में। वाड़े घर में। ओके, बहुत बढ़िया। तो आज आपको क्या लगता है कि आपको यहाँ से आज क्या फ़ायदा होने वाला है? कुछ नया सीखने को मिलेगा। नया सीखने मिलेगा। बढ़िया, अपने सीनियर्स से, अपने कम्युनिटी से, राइट? थैंक यू वेरी मच। आपका नाम क्या है और आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मेरा नाम है विक्रांत भागवत। आई एम नेशनल सेल्स मैनेजर फॉर रीएजेंट्स। तो यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में आपने हिस्सा क्यों लिया है? जैसे एक ही जगह पे हमको हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो डिस्प्ले करने को मिलते हैं और एक ये ऐसी जगह होती है कॉन्फ्रेंस की जिसमें हम लोग एक साथ एटलीस्ट कम से कम 50 से 60, 70 या 100 लोगों को इकट्ठा मिल सकते हैं एक ही दिन में। ओके। और हमको जो है वो एक्सपोजर बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। ये बेनिफिट मिलता है हमको। तो आपकी जो कंपनी है AGD, वो रिएजेंट्स और ये मशीनरी बनाती है? यस, AGD एक मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रही है। इसमें से 80% प्रोडक्ट जो है हमारे वो मेड इन इंडिया है। हमारी यहाँ पे 3 फैक्ट्रियाँ हैं, एक रबाले में है, देन एक अंबरनाथ में है और एक हिमाचल प्रदेश बड्डी में है। अच्छा। कुछ इसमें हम लोग रिएजेंट्स बनाते हैं, कुछ इसमें इक्विपमेंट्स बनाते हैं, मशीन्स बनाते हैं। ओके, तो ये इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ के लिए है? ये जो है ये 3 पार्ट डिफरेंशियल सेल काउंटर है अपना CBC करने के लिए। फिर ये जो है ये 5 पार्ट डिफरेंशियल सेल काउंटर है। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड और आयनिक कैल्शियम के लिए। ये सेमी ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र है। और वो जो है वहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये कोआगुलेशन के लिए है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम के लिए। और ये जो है ये HbA1c और CRP के लिए मशीन है। अच्छा, तो ये सारे प्रकार के जो मशीनरीज इक्विपमेंट है शरीर के अंदर की रक्त की जांच के लिए किए जाते हैं? यस, अलग अलग तरीके का जो अपना जैसे जॉन्डिस हो गया, डायबिटीज़ हो गया, आपके प्लेटलेट्स हो गए, WBC हो गए, वो सब चीज़ों की जांच करता है। बढ़िया। तो आज के इस कॉन्फ्रेंस से आपकी कंपनी को क्या फ़ायदा होने की संभावना है? क्या उम्मीद लेके आए इस कॉन्फ्रेंस में? हमारी उम्मीद यही है कि जैसे हम लोग जो कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं मेड इन इंडिया, तो यहाँ पे आने वाले जो भी टेक्निकल लोग हैं वो इस बात को सराहेंगे कि मेड इन इंडिया को
ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ये हमारा पर्पस है। और ये जो फॉर्मेट है ये हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच Thank you. के लिए थैंक यू। I am Bharat Dave, in field since 1980. 1980 से है सर आप लॅब चला रहे हैं? हे आमचे सिनियर आहे. ओहो तुम्ही अगोदर असेल ना 80च्या अगोदरपासून. हाँ, my life is like 1986. You started in 86. No, my wife has started. Your wife started. Yeah, she is there. And the last 39 years she is practicing. Oh, ho, ho, ho. And I was working with KEM, Nair, Cooper, then Hafkin. You are an ex-employee of municipal corporation. Yes, I retired as a director from Plasma Fractionation Center. Then I was heading. NPFC also you were. NPFC was a director. Yeah, 7th floor. 7th floor. Sorry. 7th floor. Then Hafkin I was heading quality assurance, regulatory affairs. Oh, great. So I was trained in USA, then in Sweden. Plus now I'm helping my wife for running the lab. And currently we are started a training program for the biotech students, BMT students. Okay, sir. On workshops, hands-on workshops. So that is a good, hands-on. And not only just theory, practically we are giving them workshop to do their own. Plus we are opening the machine and showing the inside. We are calling biomedical engineer also. We are calling. Great. So we are trying and. So by qualification, are you a biochemist? I'm a biochemist, PhD, masters in HRD, ISO. Such a huge and little qualifications you have, sir. So we are doing this. So we think we should progress. Sir, just for my knowledge. Yes. Which department you were there in KEM and SAN? See, Cooper. I was in Cooper Hospital as a biochemist. Okay. I was in Nair Hospital in chemical pathology when Mr. A.G. Pradhan was my boss. Oh, 19. Yeah. Then I was in Bhagwati Hospital also. SN Bhagwati Hospital. Bhagwati Cooper and Bhagwati Hospital. During Dr. Mahendra Wadiwala's time? Wadiwala was also there. And then I was in KEM as a National Plasma Fraction Center. I went to training in Sweden that time, Pharmacia, for chromatography. And then I went to Hafkin. During your tenure, Dr. I think Mrs. Dandekar was Yeah, Dandekar was in biochemistry and we were in a plasma fractionation. We were the first head, I know very well. Dr. Vijay Lakshmi Ray was my boss. Yes. And then I went to Hafkin Biopharma. Taskar madam was my teacher. She is my teacher, my guide. I did PhD. And then I went to Hafkin as a QA head. I was trained in USA by WHO also. So that is how I did some work, and still now I am in the IPC committee of the NIB and IPC. So it becomes your moral responsibility to contribute in such kind of associations to motivate youngsters. Definitely. Yeah, why not? Yeah. Actually, One point I will tell. Thank you, sir. Thank you. How many medical technologists will be able to practice after 5 years? To tell me. This is my only question. I have been working for last 40 years in private practice since 30-35 years. Okay. With the present scenario which is coming up, correct, where we will be once we dominated the field, now somebody else is dominating the field, and they are going to give us a GPL. Almost given a GPL. Now all new technicians will be able to stand. They are all going to stand in the hospital only, not in private. Moral and professional responsibility of seniors to guide and motivate juniors and bring them. I am very frank speaking guy. Sir, agreed, sir. My registration in PMC has been rejected thrice. Okay. Because I am from old SSC. 11th SSC. 11th SSC. Pune board. My registration has been rejected thrice. Okay. Now, how do you expect us to guide others? Sorry. No problem, sir. I am 30-40 years experience in chemistry, hematology, all the sections except hematology and biology, microbiology and histology. Okay, thank you very much. My name is Rajani Sumanta Karnik. I am running Karnik Pathology Lab in Borivali East since 39 years. We are using all AGD instruments and chemicals. Okay. And doing well. You have been running your laboratory since 39 years, so it's the time for you to give back to industry and community. Yeah. So how you are trying to add new members to such kind of association? We will now see how to do it. Okay. Since how long you are associated with this association?
Not long. Not long. Did you get any kind of advantage or benefit after getting associated? Yeah, sure. It's good. Many types of instruments, then reagents with good results, quality. So that. And networking too. Yeah. Okay, thank you.